कैबिनेट बैठक चलता राज्य में प्रेस रिलीज होची सीधा सड़क नहीं जाउछु सेठाको. Today we have the cabinet for the people who are the lifeline of our cities and towns. They are the silent ones who keep our homes secure and comfortable. It is because of their sacrifice and hard work that the kitchens run, the gardens bloom, the city breathes, and we feel secure. However, it is a fact that throughout the country, most of these providers live in slums, having day-to-day uncertainty about their homes. The fear of eviction, coupled with harassment, is always in their mind. Today's cabinet is dedicated to all such people. We have taken a historic decision today to grant land rights to the slum dwellers living in municipal councils and notified area councils of the state, and property rights to those living in municipal corporation areas. The cabinet today approved promulgation of 2 ordinances for assigning land rights or property rights to the identified slum dwellers for development, rehabilitation, and upgradation of slums. As far as practicable, efforts will be made to provide these rights on an in situ basis. The urban poor in slums will get land rights for residential use that are heritable, mortgageable, and non-transferable. In corporate areas, limited transferable rights will be given. My government is also fast-tracking civic infrastructure and improving living conditions for slum dwellers. It has been the persistent effort of my government to bring about growth that is inclusive and empowering. Today's decision will be a landmark step in this regard, setting a benchmark for the entire country. Thank you. राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक जब बसला आप शुणुते ये मुख्यमंत्री प्रेस मीट तेरे जदि देखा आगु को जेहेतु पौर निर्वाचन आसुच्ची कैबिनेट बैठक बसला किभली भाव विकास जदि देखा तेरे शासन सचिव कौन कहते प्रेस मीट एनएसी एंड म्युनिसिपल काउंसिल एरियाज और द्वितीयटा फॉर कॉर्पोरेशन एरियाज 5 कॉर्पोरेशंस सो फर्स्ट जोटा कहली मु एनएसी और म्युनिसिपालिटी रे से लैंड राइट दिज्व लैंडलेस स्लम ड्वेलर मानक ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू बी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट सेटलमेंटा अप टू 60 स्क्वायर मीटर्स माने अबाउट 600 स्क्वायर फीट हम इन द एनएसी एरिया मैक्सिमम एरिया आउ काउंसिल एरिया रे 45 स्क्वायर मीटर्स 450 स्क्वायर फीट दैट इज द मैक्सिमम काउंसिल एरिया मु आग म्युनिसिपालिटी माने म्युनिसिपल काउंसिल कथा कहली सो आग एनएसी आ म्युनिसिपालिटी डील करियो तापर मु आई विल कम टू कॉर्पोरेशन सेपरेटली सो नॉर्मली 30 स्क्वायर मीटर इज द 300 स्क्वायर फीट जाए सेटल करा दिबो किंतु मैक्सिमम अछि एनएसी रे 600 स्क्वायर फीट आ म्युनिसिपालिटी रे 450 स्क्वायर फीट so up to 300 square feet free of cost that land can be settled for EWS category beneficiaries. EWS category माने up to 15,000 rupees per month jar income माने वर्ष को 1,80,000 टका जार income he is categorized as EWS. तो सेमान का नारे इटा फ्री रे सेटल ही परिबो. Other than EWS category जदि कई लोक अछंती सेठे स्लम एरिया रे ताहले सेमान को नारे गोटे पर्टिकुलर बेंचमार्क वैल्यू रो जहाँ गोटे परसेंटेज फिक्स करा जिवो सेही रेट रे लैंड कैन बी सेटल्ड इन देयर फेवर इन दी एनएसी एंड म्युनिसिपैलिटी एरिया दिस इज द लैंड व्हिच इज सेटल्ड इज हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल सो ही कैनॉट हिज सन और डॉटर कैन गेट दैट लैंड आफ्टर हिम
but he cannot transfer it to another person. However, he can mortgage it. He will have mortgageable rights. Jodi gote loan aniyaku achi for doing constructing a house there, he can mortgage it to the bank and get a loan for that. He will get a certificate in his name and his spouse's name. Jodi married thibo, jodi married na thibo tale janaka nare ute certificate milibo, which will this is somewhat similar to the Forest Rights Act ame jo patta douchu, sei type ro eta patta ta hobo eta. आउ केवल रेसिडेंशियल पर्पज में व्यवहार कर परिवो से जमी एंड जते दूर संभव हो जो जोठे रहउची सेठे ही ताकू से लैंड ता सेटल करा जिवो आ जदी इट इज नॉट टेनेबल जदी से रास्ता कड़ रे रहउची एवं सेटा नेशनल हाईवे रो जमी किबा स्टेट हाईवे रो जमी ताहले ताकू अन्य जगह रे जमी जा जाय कि सेठू से मूव करा जिवो एवं जदि मूव करा जिवो काकू ताले एडिक्वेट ट्रांजिट अरेंजमेंट भी करा जिवो सो दैट ही इज नॉट पुट टू मच ऑफ इनकन्वीनियंस. ये जो लैंड राइट ता दिया जिवो दैट विल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस बाय वेरियस अथॉरिटीज एवं कलेक्टर को अध्यक्षता रे गोटे स्लम रिडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन कमिटी अर्बन लोकल बॉडी लेवल रे कन्स्टिट्यूट करा जिवो गोटे नोटिफाई करा जिवो एवं यही बॉडीटा दिस यही कमिटीटा यही सर्टिफिकेट को दबो जो लैंड राइट सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय दिस स्लम रिडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन कमिटी दैट इज हेडेड बाय द कलेक्टर एवं गोटे अर्बन पुअर वेलफेयर फंड भी कन्स्टिट्यूट करा जिवो जो रिहैबिलिटेशन एंड रिडेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्लम्स कहना खाली लैंड सेटलमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव इज जे से माने वी विल प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दिस स्लम्स. तो ता अर्थ रास्ता करा जिवो वाटर सप्लाई विल बी एनश्योर्ड एवं जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना किंबा अन्य स्कीम रे एलिजिबल अछंती सेमान को सेइथरे भी सहायता दिया जिवो. सो इट विल बी अ बास्केट ऑफ सर्विसेज नॉट जस्ट सेटलमेंट किंतु जेहेतु एक्ट इज ओनली फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड बट ओवरऑल हमर जो हाउसिंग पॉलिसी अच्छी अर्बन एरिया रे सेइथे आमे आवर ऑब्जेक्टिव इज टू make the slums more habitable so that the quality of life there improves. That is what the objective is. Corporation area, let me finish the corporation. Corporation area we will not be giving land rights. We will be giving only dwelling rights. ता अर्थ होची जे we will give construct flats under the affordable housing scheme जोटा कि वर्तमान आरंभ भी हिसालानी इन भुवनेश्वर. सो फ्लैट है कि समान को जो दिया जीवो एंड जदि सेही जगह रे ए अफोर्डेबल हाउसिंग करी हबो सेठी करिवो ना जदि दैट लैंड कैन नॉट बी सेटल्ड सपोज इट इज फॉरेस्ट लैंड और इट इज हाईवे लैंड और समथिंग then they will be shifted from that place and relocated with this affordable housing. In case of corporation area, the property rights will be heritable, mortgageable, and they can be transferable after 10 years. 10 years ownership for it can be transferred, and it is only for residential purpose. And as far as possible, it will be in situ. जो जगह अच्छे से जगह से सेटल करने आम चेष्टा करूँ. सपोज स्लम हैज 200 रेसिडेंट्स ताहले आम से स्लम एरिया रे ही से फ्लैट करके तांकू रिसेटलमेंट करने पे चेष्टा करूँ. सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट कि को स्लम रे सेटलमेंट करेंगे और को स्लम रे करेंगे नहीं. सो दैट डिस्क्रिप्शन हैज बीन लेफ्ट टू द गवर्नमेंट. No. Corporate commissioner. NSC रे जमी दिया होची तकू एठे तकू. This is only a dwelling unit. This is only a flat which is being given. Dwelling unit. Not right over there. He doesn't have. Only an eligible beneficiary. It will be given. He will be allowed to sell to another person who is of that category only, EWS category, number one. Number two,
obviously he will not be eligible for another affordable housing in the same in the corporation area. सेटा तो कोटा कहले नहीं लैंड एनक्रोचमेंट आमे जो नोटिफाई करिवु वी विल अप टू अ स्पेसिफाइड डेट ओनली जो हमरो ऑथराइज स्लम जहा अछि सेही मान को ही एटा एप्लीकेबल हो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन परपेचुइटी नहीं सेटा भी नोटिफाई करा है नहीं सेटा केते वर्ष rules रे से गोटा का सेटा दैट विल ऑल कम इन the rules which will be done. It will be notified as on a particular date. So it is not कि perpetually in the future हमें जैसे हमके occupation हो तो सेटा को settlement करी जीवो. स्लम कमिटी स्लम लेवल रे जा कमिटी हबो म्युनिसिपालिटी और एनएसी एरिया रे कलेक्टर नेतृत्व रे से कमिटी ये गुडा को करिवे सर्वे करिवे जियो स्पेशियल मैपिंग करिवे स्लम पर बाउंड्री गुडा को फिक्स करिवे देन दे विल टेक अप हाउस टू हाउस सर्वे करिवे डिटेल सर्वे करिकी तापरे जो मानकर एलिजिबिलिटी देखिवे तापरे तांकर एड्रेस प्रूफ देखिवे देखि जो कट ऑफ दिया हिची से कट ऑफ भितरे जदी थिबे ताले तांको सेटल करा दिबो म्युनिसिपालिटी एनएसी एरिया corporation area रे commissioner नेतृत्व committee हबो that committee also will take up a similar exercise only thing instead of land एटी आपनकर dwelling unit करी दिया जिवो बा greenfield land दिवो सेटी site and service scheme बढिया गोटे करी करिवे सर हम डाउन लैंड जमी गरीब लोग कोटे बिकी पारुनी किन गरीब लोग कोटे फ्लैट तक बिकी के बार 10 वर्ष तक फ्लैट कोटे नहीं पड़ेबो नहीं तारे फ्लैट हला तारे बेनिफिट ये स्कीम रे पाइला परे एक्ट अनुसार फ्यूचर रे समाने बेनिफिट फर्दर बेनिफिट पाई पारे नंबर 1 नंबर 2 हला यदि जणे आजी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रे अछंती से गोटे सहज पाउछंती ता माने नहीं से भविष्य रे केबे भी से ऊपर के जाई परबे नहीं सब बळे से छोटिया गोटे घर रे रहिबे बोली हमें तो बाध्य करि परबे नहीं 10 वर्ष परे वी शुड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू मूव इन दी the eligibility have any then they will not be eligible they will not be eligible for not be eligible now we have Aadhaar card we have so many other ways to identify biometric identification kariya pe so suppose we have a database which has the names of people who have been given benefits under this a second time taku benefit diya jibo nai ha nahi ethre landless is applicable only for land held in urban areas so gaare से थाई परे बट व्हेन ही कम्स हियर आमे केवल इनकम क्राइटेरिया देखिबु जदि 15000 रु कम तार इनकम अछि मासिक इनकम देन ही विल बी एलिजिबल मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज सेटा तो आमे 300 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट ड्वेलिंग यूनिट सेटा स्कीम रे सेटा भी हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम रे जेती हेई चंदी से सारा स्केल अप करके करा दिबो शुणु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जोड़ा कही की गल स्लम रिहैबिलिटेशन इज वेरी मच a part of the agenda of any government. It is not the government in Odisha or any other place. Beginning from Delhi, all other cities, slum rehabilitation is a very important scheme. Bombay re gata 50 varsha helani semane slum rehabilitation koruchନ୍ତି because people who are providing urban services cannot afford to buy land and construct buildings in the urban areas. That is a recognized fact. In Delhi, the servant quarters are constructed in all quarters so that people will come and stay there. That is not possible everywhere. So slum, shununtu. It is kindly listen to me. A person doesn't come to the city out of any love or affection. He comes for a livelihood to the city. He doesn't come here to this leaving his home behind. He doesn't come here for for having fun. He comes here to work, and in course of that work, he is not able to own property in the city because it is not affordable. जेहेतु से affordable नुह से इस्लाम रे जाके रहउछन से माने. So it is not that we are encouraging people to come and
only occupy all the government land here. Thank you. कैबिनेट बैठक पर ये थिला मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी प्रेसमिट जहाँ आप शुणुते जे जी रही सहरांचल बस्ती बासिंदा जो मैंने रही मिल जमी तेज जो मैंने भूमिहीन रही से केवल घर पर जमी मिल कि जो जमी मिल से बैंक में बंधक पकई ऋण जदिव आनीपारे कि बदल करें ना कि बिक्री करें ना तेज से योग्य व्यक्ति 15,000 रु मास को कम इनकम करुवे जहाँ शासन सचिव निजर प्रेसमिट रे वक्तव्य रखुले जदि देखा तेरे लैंड मिल एड्रेस प्रूफ रे एवं पौरांचल विकास पाई जो प्रस्ताव आसबार थिला कहीं आगक जेहेतु पौर निर्वाचन आसुछि से प्रस्ताव गुड़िक उपर मोहर बाजी एवं लैंड सेटलमेंट करा जो माने भूमिहीन रही जमी दिज्व केवल घर करने जमी दिज्व एवं जहाँ से जो योग्य हिताधिकारी रहिबे सेमानकर जदि देखा मासको रोजगार 15,000 रु कम रही दरकार एवं लैंड एड्रेस पाखे दरकार अर्बान वेलफेयर फंड सहरांचल बस्ती बासिंदा उन्नति राज्य सरकार यह नुआ निष्पत्ति नहीं कैबिनेट मीटिंग रे।